पंखे चले ना कम लाईटच्या जोरात अगर ही पारणी त्याच्या लाईट अच्छा गर्मी लगती है लाइट कम ही पंखा तुम्हारा आज कितना घंटे से टॉप ध्यान छूटी है बॉस नहीं है इसकी तारें लंबी हो जाती है ना हमारे साथ संचलन प्रमोट करने का अच्छा विषय शिफ्ट ना कराते प्रिलिमिनरी होमिज पढ़ने के बाद फिर हम करते हैं ना तिरतन वंदना तो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए तिरतन वंदना पेज 10 और कुछ अब हम वो करेंगे और वो ज्ञान आलोचना नहीं है ज्ञान आलोचना ज्ञान आलोचना ज्ञान नहीं पाली में ज्ञान शब्द नहीं पाली में ज्ञान शब्द नहीं ज्ञान ज्ञान अन्य जैसे ज्ञान होता है वैसे ज्ञान वाले करो ना चलो मॉर्निंग चैंटिंग पेज 2 हिंदी बुक यो सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तमयं भगवन्त सधम्मं ससंघं इमे हि सकारि यथार्हं आरोपिते हि अभिपूजयामा साधुनो भन्ति भगवा शुचिरपरिनिर्भूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपणाकारभूते पटिगणातु अम्हाकं हिताय सुखाय अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्त अभिवादे स्वाखतो भगवता धम्मो
धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्भां नमकारं करोमसि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। त्रिरत्न वंदना पेज 7। हन्दमयं रतनतय प्रणाम गाथा यो चीव संवीग परिकीर्तन पाठन च भणामसि। बुद्धो सुशुद्धो करुणामहर्णवो योचन्त शुद्धवरज्ञानलोचनो। वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तं। धम्मोपदीपो वियत सत्तुनो। यो मार्गपाकामतभेदभिन्नको। लोकोत्तरो यो च तदत्थदीपनो। वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तं। संघो सुखेताभ्यतिकेतसन्नितो। यो दिट्ठसन्तो सुगतानुमोदको। लोलपहीनो अरियो सुमेधसो। वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तं। पुण्यं मया यममम सबुपद्दवा। माहोन्तु ते तत्स्वभावसिद्धयः। तथागतो लोके उपन्नो अर्हं सम्मा सम्बुद्धो। धम्मो च देशितो नियानिको उपशमिको परिनिब्बानिको। संबोधगामी सुगतपवेदितो। मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामः। जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं। शोक परिदेव दुःखदोमनस्सुपायासापि दुःखा। अप्येहि संपयोगो दुःखो प्रियेहि विप्रयोगो दुःखो। यमपि इच्छं न लभते तमपि दुःखं। संकीर्तेन पंचुपादानकन्दा दुःखा। सेयथीदं रूपपादानकन्दो। वेदनोपादानकन्दो। संयोगोपादानकन्दो। संखार उपादानकन्दो। विज्ञान उपादानकन्दो। ये संपरिज्ञाय धर्मानो सो भगवा एवं बहुलं सावके विनीति। एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासने बहुला प्रवर्तते। रूपम् अनित्यं वेदना अनित्या। संज्ञा अनित्या। संखारा अनित्या। विज्ञानम् अनित्यं। रूपम् अनत्ता। वेदना अनत्ता। संज्ञा अनत्ता। संखारा अनत्ता। विज्ञानम् अनत्ता। सब्बे संखारा अनित्या। सब्बे धम्मा अनत्ताति। ते मयं ओति नामः जातिया जरा मरणेन। शोके हि परिदेवे हि दोमनस्ये हि
उपायासे ही दुःखोतिना दुःख परिता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःख खंदस्य अंतकिरियाय पर्यायेथाति चिर परिनिभूतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटिपजाम सासानोपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखखन्दस्य अंतकिरियाय संवततु। Connected to 6B7738-2D. Now we'll listen to Dhammapada, chapter 12, अत्तवग्गो, उसको सुनेंगे, फिर हिंदी अनुवाद। कौन सा चैप्टर है? 12। क्या नाम भरा था? अत्तवग्गो। इसमें लोक भग्ग दिया हुआ है। ये तो नहीं श्लोक अत्तानंते। ऑर्डर चेंज किया हुआ ना जरा गुरु था, इसमें अत्तवग्गो अगला हुआ, कई जगह ऑर्डर चेंज किया हुआ है। को है इसमें किसी और नाम से चैप्टर चौथा थी आया। අත්තානං චේපියං ජඤ්ඤා රක්ඛේයනං සුරක්ඛිතං තින්නං අඤ්ඤතරං යාමං පටිජග්ගේය පණ්ඩිතෝ අත්තානමේව පඨමං පතිරූපේ නිවේසයේ අතඤ්ඤ මනුසාසේය නකිලිස්සේය පණ්ඩිතෝ
අත්තානං චේ තථා කෛරා යතඤ්ඤ මනුසාසති සුදන්තෝ අත ධම්මේත අත්තාහි කිර දුද්දමෝ අත්තාහි අත්තනෝනාතෝ කෝහිනාතෝ පරෝසියා අත්තනාහි සුදන්තේන නාථං ලභති දුර්ලභං අත්තනාහි කතං පාපං අත්තජං අත්ත සංභවං අභිමන්තති දුම්මේධං වජිරං වස්මමයං මනින් යස්ස අච්ඡන්ත දුස්සීලයන් මාළුවා සාලමිවෝත්තතං කරෝතිසෝ තතත්තානං යථානං ඉච්ඡති දිසෝ සුකරානි අසාධෝනි අත්තනෝ අහිතානිච යං චේ හිතං ච සාධුං ච තං වේ පරම දුක්ඛරං යෝ සාසනං අරහතං අරියානං ධම්ම ජීවිතං පටික්කෝසති දුම්මේධෝ දිඨෙන් නිසාය පාපිකං ඵලානි කට්ඨකස්සේව අතඝඤ්ඤාය පල්ලති අත්තනාහි කතං පාපං අත්තනා සංකිලිස්සති අත්තනාකතං පාපං අත්තනාව විසුද්ධති සුද්ධේ අසුද්ධේ පච්චත්තං නාඤ්ඤං අඤ්ඤෝ විසෝධයේ අත්ත දත්තං පරත්තේන බහුනාපින හාපයේ අත්ත දත්ත මභිඤ්ඤාය සදත්ත පසුතෝසියා සාධු 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 इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अत्तानम अपने को वैसा ही बनाए जैसा दूसरों को दे अनुदेशन, आत्म संयत ही करे अन्य दमित, वस्तुतः अपना निग्रह अति कठिन। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया अत्तना ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। स्वयं हम अपनी नाथ हैं, कौन पराया नाथ। आत्म संयम से मिलता हमें सचमुच दुर्लभ नाथ। अत्तना हि कतं पापम अत्तजम अत्त संभवम अभिमथति दुमेदम वजिरम वस्मयं मणिं। अपने द्वारा किया गया पाप, अपने द्वारा संभावित, अपने से उत्पन्न कुचल देता दुर्बुद्धि को
जैसे हीरा काटता वही शिला जिससे होता उत्पन्न। यस्य अत्यंत दुस्सील्यं मालुवा सालिमिवोत्थतं करोति सोतथत्तानं यथा नमिच्छति दिशो। जिसका फैला दुराचार जैसी मालवा लता शाल वृक्ष में फैली, वह अपने को वैसा ही कर लेता जैसा चाहती उसके वैरी। सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च यं वेतं च साधुं च तं वे परं दुःकरम्। अनुचित अहितकर कार्य करना है सुकर, पर जो है उचित हितकर वह करना अति दुष्कर। यो शासनम् अर्हतम् अरियानं धम्म जीवनम् पटिको सति दुम्नेधो दिट्ठं निस्साय पापिकम् फलानि कटकस्यैव अत्तधाताय फलति। आर्य धर्मजीवी अरहंतों की शिक्षा, जो दुर्बुद्धि पापी मिथ्या दृष्टिवश कोसता बांस के फल सदृश आत्मघात हेतु फूलता। अत्तना हि कथं पापम् अत्तना संकिल्लसति अत्तना अकथं पापम् अत्तना विसुज्यति। शुद्धि अशुद्धि पच्यत्तं नान्यो अन्ययं विशोधये। अपने द्वारा कृत पाप अपने को ही करता अशुद्ध, अपने द्वारा अकृत पाप अपने को ही रखता शुद्ध। शुद्धि अशुद्धि अपने हाथ, कोई न कर सकता दूजे को शुद्ध। अर्थदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये अर्थदत्थं अभिन्याय सदत्थ पशुतोषिया। बहुत पराये हित हेतु भी अपने हित की न हो क्षति, अपना हित भली प्रकार जान सच्चे हित हेतु हो समर्पित। अब हम 45 मिनट ध्यान करेंगे और उस रिफ्लेक्शन अजान अमरूप इनर स्पेस आउटर स्पेस टाइटल है उसका, सुनेंगे। Gathering together at the beginning of the day, the cool of the early morning, light and color just beginning to come back into the world.
bringing attention to the quality of inner space. Space in this room, and space in the world around us. Developing that attention to notice the space that's always here, the space around things, the space within things. To help us recollect, to awaken to the inner space, the space of our minds that receives and contains, encompasses all thoughts and feelings, perceptions, moods. Bringing attention to the inner sound, the sound of silence. Directly supports that attending, awakening to the quality of inner space. Helps to remind us that the quality of awareness, our own heart, is infinitely accommodating. There's room for everything. Allow the heart just to rest in that quality of open awareness, spacious awareness, receiving the experience of sound, sensations of the body, feelings of warmth or coolness, light or dark. Being that receptive, spacious, accommodating awareness, receiving all things without bias, without partiality. The heart being a vast, infinite open space that accommodates all things, rejects nothing, allows it all in, and also holds on to nothing. It's like space does not keep objects stuck in it. In the same way, the space of our minds receives all things, lets go of all things. A sound arises and passes. A mood arises and passes. A feeling arises and passes. There's nowhere for it to land, nothing for it to stick to. Just let it be known as it takes shape, does its thing, as it dissolves, leaving no remainder. We talk about letting go, we use that kind of a language. But notice how that also implies that there's been a holding on, and a me that's been doing some holding. But more truly, in a more real and complete way, it's not so much a matter of letting go, but training the heart to not grasp, not identify, to not create that illusion of ownership
in the first place. So just like a sound in the same way, the space of our minds receives all things, lets go of all things. A sound arises and passes, a mood arises and passes, a feeling arises and passes. There's nowhere for it to land, nothing for it to stick to. Just let it be known as it takes shape, does its thing, as it dissolves, leaving no remainder. We talk about letting go, we use that kind of a language. But notice how that also implies that there's been a holding on, and a me that's been doing some holding. But more truly, in a more real and complete way, it's not so much a matter of letting go, but training the heart to not grasp, not identify, to not create that illusion of ownership in the first place. So just like a sound arises and passes with no remainder. A word that I speak, we hear it, it arrives, it's known, there's silence before it, silence after it. There doesn't need to be any kind of remainder. We don't need to let go of a sound. It comes and goes on its own. We know we can't own it, hold it, keep it. So rather than letting it go, recognize how, in truth, it's never really been owned. It's never been possessed by an I, by me. So it's more to do with sustaining that awareness of the inexorable, incessant flow and change, the modulation of perceptions, patterns of consciousness, patterns of nature, arising, blossoming, dissolving, following their own laws. It's like a star or a cloud or a sunset. Can't be possessed or owned, but it can be known. In the same way, just allow the feelings of the body, emotions, moods, thoughts, to be ownerless, to arise, take shape, be fully received, known, and let them dissolve. Being that unlocated, non-possessive heart of awareness. Being that quality of knowing that participates in all experience, but without confusion, without possessiveness.
Developing this so that the layers of attachment and identification, the layers of self-view are seen more and more clearly, let go of. Reflecting on the feelings of ownership, the feelings of self and I and mine. Reflecting on the feelings of locality. In the Udana, the inspired utterances of the Buddha, he says, there is that sphere of being, that ayatana, that mode of being, where there is no earth, no water, no fire, no wind. There is neither this world nor another world. There is neither infinite consciousness, infinite space, nothingness. And in that realm of being, that ayatana, there is neither moon or sun or stars. There is neither a coming nor a going, nor standing still. There is no basis, there is no development, no support. This, just this, is the end of dukkha. And when we hear those words, that can make us feel insecure, threatened. Ooh, what's that? No sun, no moon, no stars. No development, no support. You can feel kind of spiritual vertigo, suddenly knocked off balance. What is that? But all that's happening in that is that our familiar patterns of clinging to a me who's here in this place experiencing a world around us in three-dimensional space. Those words serve to unplug that, to dissolve that. So such words are threatening to the ego or the habits of identification with time and three-dimensional experience. But to the heart itself, it's greatly liberating, freeing. In that ayatana, that realm of being, there's neither a coming, nor a going, nor a standing still. Place does not apply. Here and there do not apply. Past and future do not apply. This was another theme that Luang Por Chah used to use, picking up directly from this teaching. He would ask people, if you can't go forwards, and you can't go back, and you can't stay still, where do you go? You can't move forwards, you can't move backwards, you can't stay still. Where can you go? So as in the same way as with the conundrum about still flowing water, he would put this kind of question to people when they came to visit. It's a conundrum, a puzzle. It confuses the thinking mind, the rational mind. Because when we're identified with the body, with time and space, the sense world, there's no solution. Or maybe we try to get clever and say, go to the side, go up, climb into a tree.
But that's not it either, is it? It's not a matter of being clever, trying to think our way around it. Because he'd say, no, you can't go sideways or up and down either. Where do you go? Well, the only way to solve the conundrum is to let go of identification with the body, with time, with place. If there's a clinging and identification with the body, with three-dimensional space, then the conundrum is insoluble. There's no answer, no solution. But if we really take to heart these daily reflections on the body is not self, feelings are not self, perceptions are not self, that's not who and what we are. And if there's a non-identification with this physical form, with the sense world, with perceptions, then there's awareness, there's that unentangled participating in experience, but it's not tied to a personality, it's not tied to an individuality, it's not tied to a physical spot. That awareness, that knowing, is unlocated. You might be thinking, but I can feel a pain in my knee, I can feel a tickle in my throat. When I cough, that cough is happening in my throat, and my throat is right here, underneath my mouth, above my chest. That's where it is. But the mind is constructing space. It creates an image of the body as a pattern of consciousness, and then orients the different bits of the body according to that pattern that it's created. When we look, we explore. Where is your throat? Where is the knee? You see, the mind has created an internal map. It says, well, it's there, down and to the left. That's where my left knee is. My throat is right here in the middle, where the cough is happening. To common sense, it says, well, it's there. It's right here, obviously. But to the uncommon sense of wisdom, we pick that up, explore it. We begin to intuit, to see that here and there, they're constructs woven together by our habits of mind, by the faculties of the mind, the conditioning of the senses. So during today, while we join together in the practice, use these particular themes. Sitting meditation, walking meditation, as we go about our business, eat our breakfast, brush our teeth, pull up weeds in the garden. Use these
events and patterns of the day to investigate these themes. How on the one level it seems like I'm walking forward, I'm sitting here. But to see what happens, to see how it changes, when we shift the attitude, when we recognize, well, there's the perception of the body walking, there's the perception of the hands moving, but that which knows the movement isn't moving. Let's see if you can discern that quality, that mysterious, beautiful openness of awareness that is free from moving forwards, moving backwards, free from standing still in this spot. The last message that Luang Por Chah sent to Luang Por Sumedho just before he had his stroke and lost his ability to move and to speak and to teach, he wrote him a letter in which he said, "Whenever you have feelings of love or hate for anything whatsoever, these will be your aids and partners in building parami, the spiritual virtues. The Buddha Dhamma is not to be found in moving forwards, nor in moving backwards, nor in standing still. This, Sumedho, is your place of non-abiding." This was Luang Por's final instructions to his disciple in setting up monasteries in the West. It wasn't a list of do this, don't do that. Always remember to follow the traditions, and a collection of do's and don'ts, shoulds and shouldn'ts. But he just reminded him of this one central, crucial principle: non-abiding, non-clinging. For when the heart attunes itself to the Dhamma in this radical, complete way, then the heart is able to respond to every situation. When we need to be conservative, we can be conservative. When we need to be creative, we can be creative. When we need to hold steady, we hold steady. When we need to adapt, we adapt. Through that non-clinging, there's a supreme attunement to the time, the place, the situation, to what each moment demands. So that was the most appropriate and best advice to Ajahn Sumedho starting up these new places in the West. To let go of progress, to let go of degeneration, to let go of even holding steady. The Buddha Dhamma is not to be found in moving forwards, nor in moving backwards, nor in standing still. It's here, in the place of non-abiding. Non-identification. No thingness. A complete openness, receptivity.
मतलब मतलब ध्यान कर रहे हैं। सर्वनो नदानि विश्वम।
7-8 बजे 7-8 बजे। हम ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। पहले मैत्री ब्रह्म विहार, ताकि मन मैत्री से भर जाए, इसलिए कुशल उपाय के रूप में पहले अपने प्रति, फिर प्रियजनों के प्रति, आरक्षण करने वाले देवताओं के प्रति, और अंत में समस्त प्राणियों के प्रति, चाहे वो मित्र हों, तटस्थ हों, वैरी हों, सबके प्रति थोड़ी थोड़ी देर रुक के विजुलाइज करके, जिसको भी हम चाहें कि मन में ये भाव लाएंगे मैत्री का। सब लोग वैर से मुक्त होंगे तो अपने आप मित्रता का भाव आएगा। द्वेष से मुक्त होंगे, दुर्भावना से मुक्त होंगे तो सद्भावना का भाव आता है। चिंता से मुक्त होंगे तो प्रसन्नता का भाव आता है। अपना संरक्षण कर पाएंगे तो सुख का भाव आता है। सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे सत्तारक्खा देवता भूमट्ठा देवता रुक्खट्ठा देवता आकाशट्ठा देवता अवेराहोन्तु अव्यापज्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुंगला
Sabbe atta bhava pariyapanna sabba ittiyo sabbe purisa sabbe ariya sabbe anariya sabbe deva sabbe manusa sabbe vinipatika avirahoantu avyapajjahoantu hoantu sukhi attanam pariharantu। अब करुणा ब्रह्म विहार लाखों लोग जो दुखी हैं बीमारी के कारण, विक्षोभ के कारण, और करोड़ों लोग जो घरों में बंद होने के कारण परेशान हैं, उन सबको याद करके, स्वयं को भी याद करके दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। सभी के कष्ट दूर हों, शोक और रोग दूर हों, जो भी बाधाएं हैं इस समय वो सब कटे, उपचार हो, उपचार मिले, सभी स्वस्थ निरोग दीर्घायु हों, ऐसी शुभकामना करते हैं। Sabitiyo vivajjantu sukho rogo vinasatu mate bhavatu antarayo sukhi dīghāyuko bhavat sukhi dīghāyuko bhavat sukhi dīghāyuko bhavat। अब उन सबको प्रति आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद जो इस विषम परिस्थिति में सबकी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी चिंता न करते हुए रोगियों के साथ सेवा कर रहे हैं। बाकी सब जो घरों में बंद हैं उनके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं। उन सब के प्रति आभार। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आए हम अपने पुण्यों को याद करें थोड़ी देर, और फिर उन सब के साथ उनका साझा करें सबके साथ कि इन पुण्यों का फल उन्हें भी मिले, ताकि वो प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जो भी पुण्य हमने किए हों, दान के, शील के, भावना के, साधना के, सेवा के, उन सब में सभी अनंत प्राणी भागीदार हों। पुण्यस्य इदानि याना अन्यानि कथानि मे
तेषाञ्च भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुरीदा ब्रह्म विहार। जो लोग अपने कर्मों के फलों को स्वरूप सुख में हैं, प्रसन्नता में हैं, घर में खुशी के कुछ कारण हैं, और जो लोग स्वस्थ हुए हैं बीमारी से और अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उन सब के प्रसन्नता में हम भागीदार हों, मन को प्रसन्नित करें और शुभकामना करते हैं कि उनकी सुख संपत्ति, उनकी प्रसन्नता बनी रहे, कोई उसमें व्यवधान ना आए। यथा नन्दा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु। अब उपेक्षा ब्रह्म विहार। सुख दुख, लोभ लाभ हानि, जय पराजय, प्रशंसा अपयश, सब में समता बनी रहे। वातावरण में जो दूषण है, बीमारी के कारण, लोगों के विचारों के कारण, कुछ लोगों की नासमझी के कारण, उस सारे दूषण से हम प्रभावित ना हों, कोई प्रभावित ना हो, और वे सब भी समता में आए। इस विषम परिस्थिति में सब मिलके समता से, धैर्य से परिस्थिति का सामना करें। एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह याद रखें, भगवान की वाणी को याद करते हैं हम कि अपने ही कर्मों का फल है जो भी हम देख रहे हैं। भासमान रूप पे लग सकता है ये हमारे देश में परेशानी बढ़ा रहे हैं, ये इस देश से परेशानी आई है। भासमान सत्य है, उसको अपनी जगह हैंडल करें, लेकिन अपने मनों को हम सुरक्षित रखें। जैसे आज हमने पढ़ा, अपने मन को हम ही शुद्ध रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। तो समता का भाव हर परिस्थिति में, चित्त कंपायमान न हो। जैसे खंबा कितनी भी तूफान आ जाए हिलता नहीं है, पहाड़ हिलता नहीं है, वैसी ही उपमा एक अच्छे साधक की भगवान देते हैं कि चलायमान नहीं होता। और उसमें ये कर्म सिद्धांत को याद करना बड़ा लाभदायक रहता है, ताकि हम दूसरों को ब्लेम न करें और अपने कर्मों को सुधारें। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। जैसे कल भी हमने सुना जानमरू से, अनिश्चितता तो है ही, वही उसमें समता ही हमारा संबल है। शुद्ध चित्त की चेतना, अवेकन्ड अवेयरनेस, उसी का हम सहारा ले सकते हैं, और उसके सहारे से हम सब समता में स्थापित हों, यथाभूत ज्ञान दर्शन कर पाएँ,
हमारी दृष्टि सम्यक हो, उसके लिए शुभकामना करते हैं। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् पापमागमात्, मा कञ्चित् शोकमागमात्, कञ्चित् दुःखमागमात्। सबकी दृष्टि सम्यक हो, सब लोग शांत हों, सौम्य हों, समता में रहें, तभी हम सबका मंगल होगा। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।